Hello friends, welcome to Stock Market Pulse. I'm Nitika. Let's check the pulse of the stock market. So again I'm here with the Nifty update for coming week, and I'll discuss the Nifty 50, Nifty bank level for coming week, and along with that I'll discuss some global market and global news also. So to know the Nifty 50, Nifty bank level for coming week, stay connected to them and smash the like button and subscribe the channel also for regular update of Nifty and index level. So let's start first with the global market and some global news. So what's happening in global market? पूरा ही मार्केट देखते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट की तो सिचुएशन इज इन लास्ट वीक वाज वेरी वेरी डाउन. इट वाज totally negative, and on last Friday it was down. The Nifty bank was down by 0.03%. Nifty 50 was down by 0.34%. एक्चुअली उसके पहले तो और भी ज़्यादा गिर चुका था. सो फ्राइडे को तो फिर भी उसने थोड़ा कम ही गिरा, बट उसके पहले एक दिन पहले थर्सडे को और ज़्यादा ही गिरा हुआ था. दिस इज़ द डेटा ऑफ फ्राइडे ओनली. एंड इफ विल गो टू द ग्लोबल मार्केट, इंडियन विक्स भी 1.46 है, विच इज़ नॉट अ कंसर्न. मतलब ठीक है, 1.46%. एंड डो जोन्स 0.31%, and see this 0.23%. Every index was down, was in red only, and the reason I will discuss behind it. But before that, let's see the crude oil situation. And crude oil में देखें तो वो भी बढ़ रहा है. It has become the 93.8, which is actually increasing only. So this is one more concern for market, because the crude oil prices are increasing. So what was the main reason behind it? First reason was the US फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग हुई थी, उसने एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि यूएस फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग होती है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट अभी तो अनचेंज रखा हुआ है, बट यस, दे आर एक्सपेक्टिंग द हायर इंटरेस्ट रेट इन coming month. And uh, uh, one more thing, this US bond yield is also increasing, number one. And number two, the crude oil prices are increasing. And number three, the foreign institutional investors are selling off in Indian stock market. So ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है वाई आर दे सेलिंग. तो ये जो यूएस फेडरल रिजर्व की जो न्यूज़ आई थी, उसकी वजह से मार्केट में ये सिनेरियो, नेगेटिव सिनेरियो दिख रहा है. मीन्स you can check these global indexes. So now let's go to the chart and then discuss uh, chart ki what is happening in Indian stock market. So now we have come to the Nifty 50 chart, and let's see what happened in last week. For the whole last week, the market was only falling down and down. And from here it has started 1, 2, 3, 4, मतलब 4 दिन तो लगातार ही गिरता रहा. कहीं पे भी कोई बहुत ही बुरी तरह से गिरा. मीन्स फ्रॉम 20,000 which was ऐसे 20,200 was a resistance, and वहाँ से when it started falling, it never looked back. It was only falling and falling for the last week only. लास्ट टाइम में मैंने 20,000 का सपोर्ट दिया था, बट मार्केट इस तरह से गिरेगा, इट वॉज नेवर एक्सपेक्टेड. बिकॉज ओनली ऑन मंडे ट्यूसडे जो यूएस फेडरल रिजर्व का न्यूज़ आया, आफ्टर दैट इट हैज़ स्टार्टेड शोइंग दिस नेगेटिव सिनेरियो. सो 20,000 का तो उस पहले ही दूसरे दिन उसने ब्रेक कर दिया दिस लेवल ऑफ 20,000. सो देयर इज़ नाउ नो क्वेश्चन ऑफ 20,000. ना रेजिस्टेंस में आ रहा है, ना सपोर्ट में आ रहा है. तो लेट्स गो मोर डाउन. एंड इफ वी सी हियर, उसने ये एक अच्छा रेजिस्टेंस, तो उसने ये लेवल 20 ईएमए का एक लेवल था जो कि वो भी तोड़ दिया, और लास्ट फ्राइडे तो ये फिर लो पे बंद हुआ. तो लो पे ही ये बंद हो रहा है. फ्रॉम हियर यू सी, यहाँ पे तो गैप अप डाउन ओपनिंग हुई, एंड वहाँ से सिर्फ लो पे बंद हो रहा है. तो मार्केट की सिचुएशन इज़ नॉट दैट गुड. एंड यहाँ पे आने के बाद तो अब ये मुझे और ही थोड़ा फॉल और दिख रहा है. बट अभी एक सपोर्ट है विच
which it was holding on Friday, that was actually I can say the 650, 19,650. This support is not looking very strong. So 19,650, okay, 19,650 is a support. Of course, it is a support, small support, but if it is Nifty 50 is breaking this, directly it will go to the 19,450. यस 450 या 440 के आसपास पहुंच जाएगा. दिस आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वीक. हो सकता है नेक्स्ट वीक के अगले वीक कुछ और भी ज़्यादा अलग सिनारियो हो, बट अभी हम नेक्स्ट वीक की बात करते हैं. तो 19,450 डायरेक्टली इट विल रीच आफ्टर ब्रेकिंग 19,650, विच इज़ अ गुड सपोर्ट. Nifty 50 level for coming week, support 19,450 and resistance 19,850. But yes, 19,450 will come after breaking 19,650. Now we'll discuss the Nifty bank level. सो इफ़ वी सी द निफ्टी बैंक चार्ट, तो उसकी सिचुएशन तो दिस इज़ मोर सीरियस. वाई? सी इसमें भी वही चीज़ चल रही थी फ्रॉम इन लास्ट वीक, फ्रॉम फर्स्ट डे, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया इसने जो गिरना. मतलब जो रेजिस्टेंस आई गेव इन लास्ट वीडियो विच वॉज 46,300. यस 46,300 वहाँ पे इसने टच किया. It has touched that resistance which I have given in last video. I'll give the link in I button. From there, it has taken that resistance 46,300. Yes, and from there it has started falling down. And from there, see one, and then again very um, good gap down opening, and from there again down. तो 20 में भी तोड़ा यहाँ पे आके, फिर 50 में, मतलब लास्ट थर्सडे इवन इन निफ्टी 50 ऑल्सो एंड निफ्टी बैंक ऑल्सो द वेरी sharp, very steep fall was there on Thursday, and this you can see only one day it has broken both moving average. And last Friday it has taken this support, which is not very good. So 44,600 का एक 600 या 550, यस 44,550 का सपोर्ट इसने लास्ट 2 डेज लिया है, बट इट इज़ नॉट लुकिंग वेरी गुड सपोर्ट. गुड सपोर्ट इज हेयर 44,400. 44,400 के पास एक अच्छा सपोर्ट है विच निफ्टी बैंक may take in coming week. But हाँ, अगर it is going to break, if it is going to break this 44,400, definitely 44,000 is not away. So this will come after breaking 44,400. Let's see what happened at this level 44,400, and then we'll if it's breaking it, we'll go to the 44,000 level. Nifty bank level for coming week, resistance 45,350 and support 44,000, but after breaking 44,400 only. At the end, in summary, Nifty 50 level support 19,450, but only after breaking 19,650, and resistance 19,850. Nifty bank level support 44,000, but only after breaking 44,400, and resistance 45,350. So to know the regular update of Nifty and index level, stay connected to the channel. Signing off.